प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है, और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है, उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। युद्धनीत जी, मुझे याद है 2008 में जब आपने मंत्री पद की शुरुआत की थी तो इसी विभाग से टेलीकॉम के एमओएस थे और अब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को और क्या प्राथमिकता होगी सर आपकी? Okay. It's indeed my honor that the Prime Minister has given me the responsibility of the Communications Ministry. Both the Telecom Division as well as the India Post Division have a tremendous role to play on a global stage as well as on a local stage to enjoin the hearts of millions of people across our country and across the world. Under his leadership, there has been a revolution in this department, and on this day, I vow to persevere and put in my best to ensure that we deliver according to the aspirations of the Prime Minister as well as the 140 crore people across the length and breadth of this country. It is also a little bit like coming full circle for me, because as mentioned, I worked as a junior minister in this department many, many years ago in 2007, 2008 and 2009. And therefore, for me, this is also a department with which I have had tremendous emotional ties. It is my sincere effort to ensure that we live up to the expectations of the people of India under the leadership of the Prime Minister. Thank you very much. Spectrum auctions, that will be one. Nothing, no comments right now. You know my style. You have followed me in earlier departments. It's very important to roll up your sleeves, put your hands in, understand the department before one starts pontificating on what the priorities are and what needs to be done. So therefore, I would kindly request all of you to give me that time, and once I have done that, I will come to you with a full plan in terms of what our priorities are.
That has always been my style, and I would like to continue down that path. So I urge you all to just have a little bit of patience for a few days until I get my learning under my belt. Thank you very much. A vision for the first 100 days that you'd like to share? A vision for the first 100 days maybe? This is my first day. So let me do my first day's work. Thank you very much.